Morning students, today we will start the new topic general method of operations of aldehyde and ketones. In our previous class we have already discussed some method which are used to prepare the aldehyde and ketones. So first हम लोगों ने देखा था by or from alcohols. So from alcohols there are two types. One था हमारे पास by dehydrogenation reaction और second था हमारे पास by oxidations. So जहाँ पर हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी जो है हमारे पास अल्कोहल कन्वर्ट होते हैं अल्डिहाइड्स में एंड कीटोन्स में. सेकंड था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. सो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड तो पहला था हमारे पास बाय हीटिंग ऑफ फैटी एसिड्स एंड सेकंड था बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ फैटी एसिड ऑन मैग्नीज डाइऑक्साइड्स जहां पर हमारे पास अल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म होता था. नाउ हियर इज थर्ड मेथड which is important method. This is the another name reaction, Rosenmund reaction. Means reduction takes place in this reaction. So aldehyde जो हमारे पास एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन एंड प्लेटिनम विद बॉइलिंग विद xylene प्रोड्यूस aldehyde. सो यहाँ पर हमारे पास प्लेटिनम कैटलिस्ट जो है इट इज सपोर्ट टू BSO4, बेरियम सल्फेट को सपोर्ट करता है एंड कीटोन डू नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. नाउ जस्ट वी सी द इक्वेशंस. Reactions are COCl plus H2 platinum catalyst support by BSO4 to form RCHO plus HCl. Now here we'll put the value of R CS3 COCl plus H2. Here it is in the presence of platinum catalyst and BSO4 support to platinum. So here it will form acetaldehyde CS3CHO plus HCl. Acetaldehyde. Now we'll take C6H5 COCl plus H2 platinum BSO4. Then here we'll get C6H5 CHO plus HCl. Means here we'll get benzaldehyde. Benzaldehyde. This is the important name reaction. Rosenmund reaction is the important name reaction. So this is the important name reaction. So here is aldehyde get readily reduced to alcohol. So we are using BSO4. BSO4 act as a poison for platinum catalyst. So which can prevent the reduction of aldehyde, reduction of alcohol into aldehyde. So here a small quantity of quinoline and sulfur also adding. This also act as a poison for this reaction. This is the Rosenmund reaction जहाँ पर हमारे पास जो होगा reductions of acetyl chloride reductions होगा, then you will get the aldehyde. Here is aldehyde get readily reduced into alcohol. So जो BSO4 है, BSO4 act as a poison for platinum catalyst and prevent the reduction of aldehyde into alcohol. A small quantity of quinoline and sulfur also added which act as a poison for platinum catalyst. So this is the important name reactions, Rosenmund reaction जहाँ पर हमारे पास reduction of aldehyde and reduction of acetyl chloride and form aldehyde. So ketone do not prepare this method. और जो हमारे पास फॉर्माइल क्लोराइड होता है HOCl is unstable. It is a unstable compound. So formaldehyde do not prepared by this method. HOCl formal chloride is unstable. So formaldehyde do not prepared by this method. So another method of operations from nitriles and esters. So here this is the another important name reactions. ये जो हमारे पास Stephan reactions है. Stephan reaction means reduction takes place in the presence of stannous chlorides and HCl. Aldimine is formed and उनका further distillations करेंगे then we'll get aldehyde. Ketone also not prepared by this method. So in from nitriles and ethers, so alkyl cyanide are reduced with stannous chloride and HCl. Aldimine is a complex compound is formed in between. Aldimine is formed and these on steam distillations give an aldehyde. Ketones do not prepared by this method. So CS3 C double bond N methyl cyanide H2
reduction takes place in the presence of stannous chloride. Aldimine is formed. CH3 CH double bond NH. This is aldimine. And stream distillations of aldimine gives aldehyde. So here it will get CH3 CHO plus NH3. This is the one method. Then we'll take instead of CH3 we'll take C6H5. SnCl2 oblique HCl. So here you will get C6H5 CH double bond NH. This is also aldehyd. And further distillation, it will give C6H5 benzaldehyde. This is benzaldehyde. So here we are writing this formula, and this is called the Stephan reactions. ये जो हमारे पास है, this is called Stephan reaction. This reaction is called Stephan reaction. This reaction is called Stephan reaction. This is the important name reaction. This one is the important name reaction. इसके पहले रोजनमूड reactions था. So this is the one part. Now just we'll see another method. जो हमारे पास nitriles हैं are selectively reduced with one reducing agent, जिसे हम लोग बोलते हैं IBALH, isobutyl aluminum hydride. Isobutyl aluminum hydride is a reducing agent. So it will convert to imines, and imines का हम लोग hydrolysis करते हैं, then we'll get aldehydes. So its name is isobutyl aluminum hydride. Another method, nitriles are selectively reduced by diisobutyl aluminum hydride से reduce होके imines form करेंगे. Then imines on hydrolysis it will give aldehydes. So here we are using these compounds DIBALH. This is a reducing agent. Diisobutyl aluminum hydrides. इसका जो नेम है वो हमारे पास है diisobutyl aluminum hydride. So its name is diisobutyl aluminum hydride. So हम लोग इसकी रिएक्शंस देखें. This is the reducing agent. diisobutyl aluminum hydride imines फॉर्म होगा, और imines का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास aldehyde फॉर्म होगा. This is the another method which are used. Diethyl aluminum hydride is not used for reduction of carbon-carbon double bond. It is used for unsaturated aldehydes. It is used for preparation of unsaturated aldehydes from nitriles. Here we will see the equations like CH3 CH double bond CH CH2 CH2 then Cl. इसका आप लोग कर रहे हो in the presence of diisobutyl aluminum hydride. Then S2. Here you get CH3 CH double bond CH. Means it is not used to double bond, not reduce double bond. This is from the product. This is the product. This name of this compound is H4 in nitrile, और इसका नाम हो जाएगा आपके पास H4 in 1
So this diisobutyl aluminum hydride is used as a reducing agent and which cannot be reduced carbon-carbon double bond. So it is used for preparation of unsaturated aldehyde from nitriles. Now next we'll start from hydrocarbons. First हम लोगों ने देखा था from alcohol, सेकंड देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड देखा था हम लोगों ने रोजरमोन रिएक्शंस, फोर्थ देखा था फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स. नाउ फिफ्थ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. सो कार्बोनाइल कंपाउंड जो होंगे मे बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स बाय द फॉलोइंग मेथड्स. पहला हमारे पास है बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस. सो यदि हम एल्काइन गैस को पास करें, alkynes are passed over hot and dilute sulfuric acid in the presence of mercuric sulfate. So a water molecule is added to alkynes. तो हमारे पास जो acetylene है it will give acetaldehyde while the other alkynes will give ketone. Now just I am writing here CH triple bond CH plus water molecule added in the presence of H2SO4 hot and HgSO4 mercuric sulfate. Here you will get acetaldehyde CH3 CHO. Here you will get acetaldehyde. While other alkynes you will use, they will give ketone. Like CH3 C triple bond CH plus H2. They will give ketone. Other only acetylene will give acetaldehyde. Same reagent. So CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 here CH3 CO CH3. So here is ketone. So this is the another method of preparations of aldehyde as well as ketone by hydration of alkynes. This is also hydrocarbons. So by the hydration of alkynes, when you pass alkynes and hot and dilute sulfuric acid in the presence of mercuric sulfate and water molecule added to alkynes, so acetylene will give acetaldehyde while other alkynes will give ketone. This now next method is by the ozonolysis of alkenes. So this is also hydrocarbon, this is also unsaturated hydrocarbons. So जब आप ओजोन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे एल्किन्स में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एट 196 केल्विन, सो हमारे पास ओजोनाइड फॉर्म होगा. Then ozonide का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे in the presence of zinc, then you will get aldehyde and ketones. So here in this method, first we will add ozone into alkene. So this is the alkene, then this is the ozone molecule in the presence of chloroform at 196 Kelvin. So आपके पास जो फॉर्म होगा ओजोनाइड फॉर्म होगा CH2O CH2 O this part. Then it is treated in the presence of ZnH2. So here you will get 2HCO. Formaldehyde you will get here and ZNO बाहर जो हो जाएगा प्लस ZNO. ये जिंक जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा प्लस ZNO. So हमारे पास जो मिलेगा एल्कीन्स में ऐड कर रहे हो ओजोन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एट 196 केल्विन, ओजोनाइड इज फॉर्म. देन आप जिंक के साथ ऐड करवा रहे हो तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म होगा. नाउ विल सी अनदर वन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3. यहां पर आपके पास होगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 196 केल्विन. हियर यू गेट CH3 CH one oxygen, another oxygen, CH2. Now valency of carbon will check it 3 and 1 4 1 2 3 4. Then here is oxygen 2 valency, carbon 2 and 3 4. So here you will get a mixture of this part. CH3 CHO. Here you will get CH3 CHO. CH3 CHO plus formaldehyde. This part also is CH2O. SCHO formaldehyde, acetaldehyde and formaldehyde. यदि आप लोग इसकी प्लेस पर जो है आइसो ब्यूटेन यूज कर रहे हो, आइसो एल्केन्स यूज कर रहे हो तो आपके पास कीटोन फॉर्म होगा. नाउ जस्ट विल सी द रिएक्शन. सी द फ्रॉम आइसो ब्यूटेन CH3
CH3 C डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप लोग ऐड कर रहे हो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सॉरी ओजोन मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो. सेम इट इज CH Cl3 196 केल्विन. सो आपके पास ओजोनाइड फॉर्म होगा CH3 C oxygen, then this is the carbon, then CH2 4 oxygen 1 2 3 4 1 2 3 4 and 2 valencies. इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो आपके पास जो है कंपाउंड फॉर्म होगा. Here we'll get what will get ketone CH3 COCH3 plus CH2O. So from this method you will obtain ketone. So ओवरऑल रिएक्शन देख रहे हैं तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में केवल एक ही कंक्लूजन निकल रहा है कि ब्रेकिंग ऑफ C डबल बॉन्ड C, जिससे हमारे पास अल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म हो रहे हैं.